और बदीन में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बाद मच्छरों के बाइस मलेरिया फैलने लगा है। मुतासरीन की बड़ी तादाद मलेरिया का शिकार हो चुकी है, जबकि ख़वातीन और बच्चे भी मुतासरीन में शामिल हैं। डॉक्टर्स की कम तादाद के लिए सूरत हाल को संभालना मुश्किल हो गया है। इस हवाले से भी आपको मज़ीद बताएंगे। इस वक्त आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अंतोनियो गुतेरेस ओस्ता मोहम्मद पहुँच चुके हैं। वहाँ पर वो फ़ज़ाई जायज़ा लेने के बाद पहुँचे हैं और सैलाब मुतासरीन के साथ बातचीत भी करेंगे और साथ ही साथ उन्हें मज़ीद भी ब्रीफिंग दी जाएगी कि यहाँ पर कितना नुकसान हो चुका है और नुकसान का तखमीना यहाँ पर क्या है। ओस्ता मोहम्मद में इस वक्त वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं और ओस्ता मोहम्मद में इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा लिया, सखर में भी मौजूद थे, वहाँ पर भी उन्हें ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आला सिंध की जानिब से ब्रीफ किया गया और बताया गया कि इस वक्त तक कितना नुकसान हो चुका है, लाइव स्टॉक किस तरह से तबाह हो चुकी हैं, इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह तबाह हुआ है, बिजली का निज़ाम किस तरह से दरहम बरहम हुआ है और जितनी भी तबाही हुई है उस हवाले से डिटेल से बताया गया है। तो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अंतोनियो गुतेरेस ओस्ता मोहम्मद में मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने एक फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया और तखमीना लगाया गया कि किस तरह से और कितना नुकसान हो चुका है। सैलाब मुतासरीन के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त सिंध और बलोचिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। जबकि सैलाब से तारीख की बदतरीन तबाही हुई है, ये उन्हें ब्रीफ दिया गया था। जबकि सिंध के 24 अजला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इस वक्त मज़ीद भी ब्रीफिंग दी जा रही है। मनाज़िर आपके सामने। And this is the largest province occupying 44% of Pakistan and rich in mineral resources. Red districts are the heavily affected and we are here at the moment. So this is bordering the province of Sindh, the north of Sindh where you have just visited and coming from. Excellency, 270 people have perished in last 3 months. The rainfall started on 13th of June and continues until recently. 1.3 million people have been displaced. 185,000 households have been either completely damaged or partially affected. 500 livestock perished. 100,000 poultry have been killed. So a lot of infrastructure has been damaged. Bridges, one railway bridge also caved in. 900,000 acres of land has been affected, agriculture lands and orchards. So the government of Balochistan evacuated more than 125,000 people safely and reached to 1 million of people who were trapped because of the road disconnectivity. We provided almost 119,000 people, families with food packs. There is a gap of 66,000. 56,000 tents were provided. 129,000 tents are still a gap. Next. Because these districts, 5 districts we are here, these are completely inundated. Still the water is there in the fields, houses have been raised. So we even lost half of our healthcare facilities. So we have conducted emergency medical camps. 1,476 camps have been held in these 3 months and more than 353,000 people have been treated. At the same time, 540 veterinary mobile camps have been set up and more than 1.4 million animals have been treated and 829,000 vaccinated. Next. So now we briefly focus the 5 districts which have been completely inundated and where we are here. These are 2 slides pictorial. This is a rescue effort going on. These are the fields and these bridges and roads completely collapsed. This is the railway bridge which disconnected the upper Sindh with Quetta. So this bridge is under construction at Mach in Bolan Valley. And we had to rescue, we had to reach to the people through helis to supply food stuff. Excellency, we have prepared a brief rehabilitation plan. 185,000 houses badly affected and the joint survey by federal and provincial agencies is under process, will be completed in 2 phases by end of September and at end of October. We estimate USD $245 million needed for reconstruction of those houses. And this rough estimate may increase. 9 lakh acres of crops have been completely damaged or means I would say 0.9 million acres or 400 hectares of land.
400,000 hectares of land. So we estimated 30 billion rupees, approximately $130 million needed to rehabilitate those who have been completely affected by these. Excellency, we prepared a complete Balochistan rehabilitation package, and I'm not going into the details. We have this package needed USD 1.028 billion to completely rehabilitate the physical infrastructure, the health, vet facilities, schools, colleges which have been damaged, and the houses which completely or partially. So way forward, this is the last slide. Excellency, Government of Pakistan and Government of Balochistan have been financing the rescue, rehabilitation, reconstruction phase, but the disaster is colossal, beyond comprehension and beyond the capacity of the provincial government. So we have requested approximately USD 1.028 billion from the federal government. UN OCHA has completed rapid damage assessment in 10 districts, and the rest of the districts are underway. And rehabilitation survey is also likely to be completed soon. Proper studies on climate resilient cities and infrastructure is the need of the hour, and effective coordination, proper management and transparency will be ensured. There is an urgent need to support from UN and donor agencies in the shape of grants, whether in cash or kind, because the people are waiting for their houses to be rebuilt where they can be settled. Thank you. एक्सीलेंसी, जैसे अल्लाह की तरफ से जो ये चीज़ें जो हम पैदा किया है उसने हमारे ऊपर ये चीज़ें आई हैं, और ये सख्तियाँ कौमों के ऊपर आते हैं। हमें ये चीज़ें आए हैं, इंशाल्लाह हम तैयार तो नहीं है, लेकिन ये कि हम किसी के सामने ये नहीं कहें कि हमें पैसे दे, लेकिन जो अल्लाह ने लाया और उसको ज़रूर ज़रिया किसी को बना देता है, कोई भी ज़रिया बन जाता है। हम इस चीज़ के लिए Excellency, the Chief Minister is saying that this calamity, this challenge has come by the act of the nature, by God. But this has also offered opportunities. The challenges are colossal, and we have to respond with the help of the federal government and the donor agencies abroad. हेल्प तो अल्लाह करेगा, और ज़मीन पे जो ज़रिया बन जाए वो उनका नसीब जो बना देता है अल्लाह खुद ज़मीन। Okay, God will help, and people would like to reconstruct and rebuild themselves. I may say something. Yeah. There is only one point I disagree. Yeah. Can translate? Yeah. एक चीज़ है जो मैं उसे इत्तेफाक नहीं करता जो आपने I कहा। also believe in God. Yeah. No. But it was not God. It was the humanity. Yeah. Carbon emissions. Carbon emissions and waging war on nature. इंसान का And किया the था nation is किया तो striking हमने, back. लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ही So it's the responsibility Is on people. of human being. Agreed. जो नुकसान हुआ है उसका हेल्प अल्लाह करेगा, ज़रिया कोई UN बन सकता है। God will help, but UN or the federal government or the other donor countries will be helpful. To which the Excellency, this is the largest province of Pakistan in terms of geography, in terms of population. It's very large. But distance are very large, and remote areas, and to reach to those areas is a very, very difficult task. Whatever infrastructure they had, it's washed away. We just saw a railway bridge which was built during the times of British Raj. That's gone. And bridges, flyovers, I've seen myself touring all these areas along with the Chief Minister. It's been terrible here. And they are all trying their best. They are trying to provide shelter, food. But this province, as I say, has lots of natural resources by the grace of God, but it lacks in terms of resources, in terms of finance and other resources. And we need to focus this province after same very sharply. And in that, I think your interaction with the international community would be very, very helpful, because
they have to travel long distances. Road is not available, communication is not available, transport is not available, and look at the. So I think this province also needs equal attention, if not more. So we go to the affected families in the tents. ने वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को सलाफ से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। 2 रोज़ पर मुश्तमिल ये उनका दौरा है। आज दूसरा दिन है और वो मसरूफ़ दिन गुजार रहे हैं। अभी वो उस्ता मोहम्मद में मौजूद हैं और उनको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। इसके बाद वो सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद सिंध और बलोचिस्तान के दीगर जो सैलाब मुतासर इलाकों हैं उनका भी वो दौरा करेंगे। आज दौरे की शुरुआत सक्खर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध की तफसीली ब्रीफिंग से हुई और उसके बाद अब वो ज़िला जाफराबाद बलोचिस्तान की तहसील ओस्ता मोहम्मद में मौजूद हैं और उनको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया है और सैलाब मुतासरीन से भी वो मुलाकात करेंगे। बाद-ए-ज़ां वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल लाड़काना भी जाएंगे जहां पर उनकी मुलाकात लाड़काना और इसके गिरदोनवाह के सैलाब मुतासरा इलाकों से आए लोगों से होगी। UN सेक्रेटरी जनरल सैलाब मुतासरीन, फर्स्ट रिस्पांस फोर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से भी मिलेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत वफाकी काबीना के अरकान और अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द भी दौरे के दौरान उनके हमरा है और दौरे के दौरान वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई